and welcome. You're watching Explosive Exclusive. I'm Padmaja Joshi. Just a fortnight left for the Lok Sabha elections, first phase of polling, and guess what? It seems that there is more fire in I.N.D.I.A than there are friends. Why? Because from Jammu and Kashmir to Maharashtra, from Uttar Pradesh to Bihar and Kerala, the alliance that aims to put up a common battlefront against the BJP is busy dousing fires in its own backyard. The seat-sharing formula is still not sealed for several states. Several candidates have still not been declared. But even as the nominations are now being filed, there is open discontent. Leave alone discontent, there is open fighting. Even where there has been an arrangement hammered out, there are disagreements. In some places, it is fight for a seat. In others, it's a tussle for a common vote bank. What this basically boils down to is that I.N.D.I.A allies are busy fighting with each other instead of fighting the BJP. In Bihar, former MP Pappu Yadav is in no mood to relent on his candidature. Remember, he has declared, I am fighting from Purnea, come what may, despite the seat having been offered to Mahagathbandhan ally RJD by the Congress itself. There was much fanfare when Pappu Yadav was welcomed into the Congress party. Now he is turning out to be a thorn in the flesh for the Congress and its ally, the RJD. The seat-sharing plan has come as a huge setback to Pappu Yadav. For months he'd been running a campaign, Pranam Purnea, seeking to rebrand himself in the constituency he represented thrice in the 1990s. He hoped that the Congress would back him for a friendly fight, even urged RJD chief Lalu Prasad to review his decision on Purnea. However, today, Bima Bharti, who is the official RJD candidate, she filed her nomination papers. So much so that Tejasvi Yadav seemed to be sending out a clear message to the Congress party. The only candidate whose nomination Tejasvi Yadav went for is Bima Bharti from Purnea, clearly sending out a message that if the Congress is expecting a friendly fight via Pappu Yadav, there's nothing friendly about this fight. आज नॉमिनेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है। कल जो है पप्पू यादव जी कोई संकट नहीं है। देशवी जी जो है हमारे विपक्ष के नेता है, सभी लोग आ गए हैं, नामांकन हम कर दिए हैं और सबसे यही आग्रह करेंगे, सभी पूर्णिया के जनता से, सभी कार्यकर्ता से यही अपील करेंगे, एक एक वोट लालटेन पर देने का काम करें। जो है कि सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, अब मना तो कर नहीं सकते हैं, हम आग्रह ही कर सकते हैं सभी से, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ रहे। नामांकन में जाना चाह रहे हैं पप्पू यादव, कल नामांकन करेंगे, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है, हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीतेंगे। Now remember, Pappu Yadav had merged his I.N.D.I.A party with the Congress. Today he wrote on X that he is in the fray out of respect for the people of Purnea, his motherland, and expressed confidence that his people will give a befitting reply to all those who are trying to insult the constituency by denying a ticket to him. With no response from Lalu Prasad to his pleas to reconsider what is going to happen next. Is it a case of north to south, east to west, now the Congress being slowly edged out by its own allies? It's happened in Sangli in Maharashtra. It's happening, battle for the Muslim vote. It's happening in Uttar Pradesh. In Amroha, Congress's Danish Ali is facing protests from the Samajwadi Party. It's Pappu Yadav in Bihar. Let's try and decode this. Taking it across to Tom Vadakkar, national spokesperson of the BJP, Rashid Kidwai, senior journalist, and author Sanjay Jha. Sanjay Jha, would you like to weigh in? Well, I want to make two short points. First and foremost, Padmaja, the very fact that there is a battle amongst many people in the opposition alliance to get a seat to defeat the BJP tells you of the faith and optimism they have, is that there is a huge possibility of defeating the BJP. You see, normally if a party is not doing well, there are very few takers. But the very fact that there's a contest going on, whether it's in Mumbai that you talked about, my good friend Sanjay Nirupam, etc., this election is up in the air. And I can tell you, I would love to hear what my good friends Tom and Rashid have to add. There is a lot of ground that is shifting literally by the day.
And, one can sense that there is a increased level of intensity and a pushback happening from the opposition. Yes, I'm going to admit that where the India... Mr. Jha, I really have to interrupt you. Much as I love your optimism, I think even motivational speakers would be hard-pressed to find a silver lining to this very, very great crowd. No, Vijender Singh, who was being considered as a candidate, today has switched over to the BJP. Sanjay Nirupam is saying, I am giving a deadline to the party. Uddhav Thackeray is saying, there is no friendly, this is only a fight. He has basically declared his candidates. Let me ask Rashid Kidwai if he sees any silver lining or optimism. Sanjay Jha seems to think that this shows कि कितना BJP के खिलाफ हवा चल रही है. Rashid साहब, what do you think? Padmaja, we have to give it something to Sanjay Jha. I think the Congress must admit him. There is no reason why they should not, be using his talent not only in this channel, but his optimism, etc. I think it's rather intoxicating. Maybe we are not feeling that way, but he's saying it, and he's saying it with a degree of conviction. The key problem, Padmaja, but as I see it, is a problem lack of ownership in the Congress. There is no single person. There used to be like Indira Gandhi's election, Rajiv Gandhi's election, Sonia Gandhi's election, even I would say Sitaram Kesri's election. This time around, there is nobody on the driving seat. There is a lot of confusion. A lot of people, including media, thinks it is Mr. Rahul Gandhi who represents the political leadership of the Congress. Rahul Gandhi thinks it is Mr. Mallikarjun Kharge, who is the official Congress president. So there's a lot of Jelebi culture, whether it's about candidature or resolving a crisis or, having some kind of crisis management. You see the usual courses, people approaching Mallikarjun Kharge telling them to go to K.C. Venugopal, K.C. Venugopal, saying it to Rahul Gandhi saying go to K.C. Venugopal. So this whole kind of the Jelebi keeps happening. And that is why no decision is taken, and that is why there is a lot of bad blood. Sanjay Jha? Rashid, that's exactly the point I was going to make, that within the India alliance, let's take an example of Pappu Yadav, who's joined the Congress. Now, let me tell you, Padmaja, we are all, seasoned people here. We understand Indian politics. An election is an opportunity for everyone to put their best foot forward. Everyone who wants a political career wants to contest an election. Now, here is the crux, that you can only get one seat if you're representing a party. And because of an alliance, it is always going to be a battle. Let me tell you, you're not mentioning this. Mr. Jha, I have to interrupt you. Let's introduce Mr. Pappu Yadav also, who has now declared that he is going to file his nomination. पप्पू जी, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, बट सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कई सीनियर पत्रकार, टॉम वडक्कन भी यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी से, संजय झा भी हैं, तेजस्वी यादव ने कुछ ही मिनट पहले बोला है, जाहिर सी बात है जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है, हमने किसी का नाम नहीं लिया, कौन कहां से क्या कर रहा है मुझे क्या पता, हम अपनी पार्टी को देखेंगे, हमारी पार्टी में नेता नहीं है क्या? कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि आप आरजेडी को, अपनी दोस्त पार्टी को सैबोटाज क्यों कर रहे हैं बिहार में? दरअसल में मैडम शायद कभी कभी उल्टा बोलने लगते हैं। पूर्णिया से 4 बार मैं सांसद रहा, मेरी मां कुछ वोटों से हारी। ये कांग्रेस की सीट रही आजादी के बाद से लेके आज तक। कभी भी आरजेडी यहां से चुनाव नहीं लड़ी। आरजेडी ने पूर्णिया सीट पर कभी चुनाव नहीं लड़ी, न जीती। रंजीत रंजन जी वहां से चुनाव 2 बार जीती। उसके बाद जब हम 20 साल पूर्णिया में नहीं थे तो आपने एक लीडर पैदा क्यों नहीं किया? आप कोई लीडर पैदा हो जाते, पप्पू यादव का जगह भर जाता। जरूरत नहीं थी पप्पू यादव की, हम कहीं और सेवा कर लेते। हम मधेपुरा में जब इन्होंने कहा हमको चुनाव लड़ने, तो यदि मेरा पूर्णिया में जन्म हुआ तो मधेपुरा तो गांव है ना मेरा। हम जब मधेपुरा में इनके बाद चुनाव लड़े, लालू जी 2 बार चुनाव हारे। हम जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की हवा थी, तब हम वहां से 1,80,000 से चुनाव जीते। और जब लालू यादव जी ने सीट छोड़ा था तो हम 2.25 लाख से चुनाव जीते। और जब लालू यादव, शरद यादव चुनाव जीते थे तब 43,000 और 28,000 से चुनाव जीते। मेरा सवाल इन सब चीजों में नहीं है। हम इंडिया गठबंधन को लगातार पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया,
जोहार पूर्णिया के तहत हम 1 सालों से घर घर 6,80,000 परिवार से हम मिले प्रणाम यात्रा के तहत। सबको पता था, फिर 2 से 2.5 लाख लोगों की एक रैली हुई जो गरीब गुरबा की रैली थी। वो जो लोग अदर धर्म मजहब को मानने वाले लोग थे, वैसे लोग उस रैली में आए। उसके बाद लालू जी हमें बुलाए। मैंने लालू जी को कहा भी कि चाहे विपक्ष के नेता की बारी हो, लालू यादव से पूछिए आप। उस वक्त तो तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी नहीं थे, जन्म नहीं लिए थे। 1 वोट से वो चुनाव जीते थे, उसमें किसकी भूमिका थी आप इसको पूछ लीजिए। पप्पू यादव के अलावा मेरे ही क्षेत्र से एक एमएलए था नवल किशोर ऋषिदेव, उनको मैंने दिया था। मेरे फूफा जी चुनाव लड़ रहे थे और अनुपलाल यादव, उनको वोट मैंने नहीं दिया। मुख्यमंत्री बनाने में भी 11 एमएलए लेकर के हम लोग, जब भी लालू यादव जी संकट में परिस्थिति से घिरे, हम बेटे के तरह से हमेशा साथ रहे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। जब उस दिन ये बातचीत हुई कि मैंने कहा पूर्णिया छोड़ के मैं कहीं नहीं लड़ूंगा, कल तक उनके परिवार के लोग, अन्य लोग हमसे टच में रहे और वो एक ही बात कहते रहे। मैंने उनको कहा कि हमने गलती क्या की, गुनाह क्या था मेरा। तो आपका गुनाह क्या है? क्या आपको लगता है कि आपका गुनाह ये है कि आप कांग्रेस पार्टी से ये टिकट मांग रहे हैं, कि फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को? अब मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं पहले बता दूं, मैंने पहले भी कहा कि ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचाई होता है। कांग्रेस पार्टी की एक लीडर जिसका नाम आदरणीय राहुल गांधी हो, फिर आदरणीय प्रियंका गांधी। राहुल गांधी पीएम कुर्सी को ठुकरा करके 10,000 किलोमीटर संघर्ष का रास्ता को वो चुनता है। अब दुनिया में उससे बड़ा सैल्यूट करने की चीजें, जिसने दिल को जीता, वो दल नहीं दिल को जीता। वो गठबंधन धर्म, चाहे कांग्रेस अलग लड़ रही हो बंगाल में, तब भी ममता दीदी का वो रेस्पेक्ट करती है। चाहे राजा की पत्नी इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हो, तब भी गठबंधन है। चाहे अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलग लड़ रहे हो, तब भी गठबंधन है। तो कहीं भी इन्होंने, कांग्रेस कभी भी देश में ये मैसेज सडनली नहीं जाए। पप्पू यादव, चलिए हम, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी एक छोटी हैसियत है। देश की लोकतंत्र और देश पहले है। राहुल गांधी जी ने, ठीक है, प्रियंका गांधी जी ने फोन की, हम पर इतना बड़ा ट्रस्ट किया, मेरे लिए यही बहुत है। और हम अपनी 20-40 साल के संघर्ष को और 20 साल की पार्टी को, जो 15 साल की पार्टी को हमने मर्ज किया। मुझे एक लार्जर कॉज और ब्रॉडर एक जगह मिला मुझको, एक लार्जर कॉज, एक ब्रॉडर स्टेज हमको मिला। तो फिर तेजस्वी जी कांग्रेस को वो आदर क्यों नहीं दे रहे जो आपने दिया है? नहीं, लार्जर कॉज के लिए हमको मिला, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप इस बात को समझिए। आप पहली बार तेजस्वी यादव जी, आज भी वो, मैं आपको बता दूं, आप मेरी बहन की तरह हैं। आपका स्नेह और सबका स्नेह इस बिहार और देश में पप्पू यादव के प्रति हमेशा रहा है। आप याद करिए ना कि मैं जब सभी लोग सो जाते थे, एक आदमी जगह नहीं रहते थे, पीएम सीएम को फुर्सत नहीं होती थी। पटना के बाहर को आप देखिए, कोरोना को आप देखिए, हम घर छोड़ करके अलग होकर के 9 महीना हम रूडी जी को देखिए होता क्या है मैडम, इसको समझिए। आज उन्हीं लोगों को टिकट मिल जाती है। जैसे बाढ़ में कोई नहीं थे, फिर जनता ने उन्हीं को टिकट दे दिया, अकेला पप्पू यादव रहे। कोरोना में अकेला पप्पू यादव सड़कों में रहे, टिकट भी उनको मिल गई, एम्बुलेंस वाले को मिल गया। जिन लोगों को ऑक्सीजन से लोगों को मार दिया, उन्हीं लोगों की तवज्जो बढ़ गई। मेरे पास लार्जर स्टेज के अलावा उपाय क्या था? जब उन्होंने कहा कि पप्पू तुम मर्ज कर दो और मधेपुरा लड़ लो, अंतिम में मैंने आज से 3 दिन पहले जब उनके परिवार के लोग हमसे बातचीत किए, तो मैंने कहा यदि उनको तकलीफ है कि मैं क्यों कांग्रेस ज्वाइन किया, तो आप उनको बोलिए कि पूर्णिया हमको छोड़ दे, हम कांग्रेस तत्काल छोड़ देते, या उनको लगता है तो मार दे दी उनको। आप उनको बताइए कि मैं उनके तेजस्वी जी के किसी भी मुख्यमंत्री और बनने में हम उनके बड़े भाई की तरह साथ रहेंगे, कोई अब स्ट्रगल नहीं होगी। कोई आप एक बात देखिए, हमसे नफरत कितना है, हमसे दुश्मनी कितना, आप इसको देखिए। पहली बार तेजस्वी जी निकले प्रचार के लिए, आज जयप्रकाश यादव का नॉमिनेशन हुआ, वहां नहीं गए। विनोद यादव राजवल्लभ का बेटा लड़ गया सरबन के खिलाफ, वहां नहीं गए। औरंगाबाद में लड़ गया, वहां नहीं गए। अन्य जगहों पर उनके हुए, वहां नहीं गए। आज यहाँ आए, बगल में
चौधरी को टिकट मिल गया भागलपुर में, वहां नहीं गए। बगल में तारिक अनवर के लिए नहीं गए, किशनगंज के लिए नहीं गए। कल उनके राज्यसभा एमपी तारिक अनवर के लिए के खिलाफ नॉमिनेशन कर रहा है डॉक्टर अशफाक करी, उनका राज्यसभा एमपी रहा। कौन है इसके पीछे? अब आप उठा के देखिए। आप basically what Mr. Yadav is talking about, just for the benefit of our viewers, the fact that Tejasvi Yadav accompanied Bima Bharti for her nomination at Purnea, didn't go for any of the other nomination of his party leaders. I want to get a quick word in from Mr. Vadakkan, and also quite an outpouring now from within the alliance of anger, of hurt, of angst, and you've heard something like this coming from your home state as well. When Pinarayi Vijayan spoke up about Rahul Gandhi in Wayanad, Mr. Vadakkan. It is imploding across the country. I mean, you have a 7.2 earthquake today morning, and it's almost of that scale what is happening. It's imploding everywhere. It's happening in Uttar Pradesh, it's happening in Bihar, it's happening in Maharashtra. It's a Mahabharat going on there. Now, my friend Sanjay Jha, I think, has given a brilliant spin to the whole thing, which I think is remarkable, because I think I agree with Rashid. They should immediately take him back. And I think whoever is against him, because I think he's one of the best spokesmen Congress party has. The spin he gives today is extraordinary. Sanjay is my dear friend, and I'm saying it on public television that he deserves to be taken back as a national spokesman of the Congress party. National campaign for Sanjay Jha to lead the Congress. I think everyone is unanimous on that. But Sanjay Jha, would you want to comment on what Pappu Yadav has said? Basically saying that one ticket which the Congress party asked for, not given, and he feels that he's being humiliated by an ally. Let me tell you that Pappu Yadav ji is a veteran in politics. I come from Bihar, and I've heard of Pappu Yadav ji's name for a very long time. You know, one has to give credit, Padmaja, to people like Pappu Yadav ji, who has fought on the ground. You know, even if you hear him now, you can hear his rustic simplicity. And he's a person who's a man of the people. Now, here is the problem. Rustic simplicity नहीं चाहिए, ticket चाहिए, ticket. तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो माहौल है, मैं टॉम जी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. Tom, you and I are friends. We will never change no matter what happens. But Tom, since you made a point, I need to tell you that in Gujarat there is so much of infighting in the BJP that some of your leaders have got hospitalized. So I think India Alliance is much better than you. But anyway, to answer your question. If you find India Alliance much better, sir, great. Optimism, thy name is Sanjay Jha. You must quickly channelize all of this and record a podcast and write a book. At least that will make millions. I'm out of time. Thanks very much, gentlemen, for having joined me.